posted yesterday? Yes, sir. Let's Sure, have a sir. quick discussion. Many people have written very nicely, but I think it needs a discussion. So, what is the first word of the day? First is, I think, attitude, right? Attitude, sir. Now, let's take the word attitude. What have you written? Guys, tell me quickly. Go ahead. Kanishk, your mic is creating some trouble. Jaldi jaldi batao. Abhishek, what have you written? Jaldi. Anyone? Sir, attitude changes perspective of life. Changes perspective of life. अगर मैं इसको अभिषेक डिफाइंस कर दूं तो your attitude defines perspective of your life. How does it look like? Sir, better, sir. Better? Yes, sir. Why the word changes? Why the word changes? It defines your kind of attitude that you have. I was seeing a documentary or some recording of Devanand, who was अभी आपने recently देखा होगा आप लोगों ने भी, because his 100th birth anniversary was there. He was speaking so beautiful. और जो मैं बात तुम लोग को बार बार बोलता रहता हूँ ना, enthusiasm. He says if you have no optimism in your life, if you're not looking forward to, what kind of attitude is this? So that personality, Devanand, for example, was fantastic attitude to life, you know. And there are certain people who have very depressive attitude to life. उनको अच्छी चीज में भी बुराई दिखनी है, डिप्रेशन देखना है, नेगेटिव देखना है. मैं तुम लोगों को पहले दिन से क्लास में क्या कह रहा हूँ? पॉजिटिव बिलीविंग. Why am I emphasizing on positive believing? I am actually talking about attitude. आपने अपना एटीट्यूड बदल देना है, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपको विनिंग की आदत लग जाएगी. समझ में आ रहा है? Yes, Everyone? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Anyone who has a better than this, anyone, so that we can quickly proceed. Anyone who is having a different way of representing it and wants to share quickly. Sir, confidence brings positive attitude. Now, what is happening here? If you write it like this, yesterday also I explained. Confidence brings Positive positive. attitude. Now you have linked the attitude to. Confidence. Confidence. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? No, sir. No, sir. आदित्य, Please again. what is missing in No, sir. you? Confidence, sir. बस. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Got it. प्लीज ब्रिंग इट आउट. आप आगे, कल मैंने Yes. इतनी लंबी क्लास ली कॉन्फिडेंस में, कल ली थी परसों ली थी, परसों उसके बाद भी कॉन्फिडेंस इशू है. No, sir. No, sir. क्या वो बोला था थोड़ा. मैंने? बिलीफ एंड Yes, sir. Confidence. फेथ. faith, belief and faith. तो अगर आप ऐसे लिखोगे, माइक बंद कर लो सब लोग, जब जरूरत हो तब ओपन करो. तो बिलीफ एंड फेथ का चक्कर है सारा. कॉन्फिडेंस बस उतना ही, अपने आप पे विश्वास. और किस पे विश्वास? God. कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी एन इशू एट दिस स्टेज. अभी हम लोग बहुत क्लासेस कर चुके हैं. व्हाट शुड बी द इशू? रिफाइनमेंट. कैसे रिफाइन करें अब अपने आप को? ठीक है. एनीवन एल्स, और शुड वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड? एनीवन? No, sir. Sir, I have a doubt. Sir, you have written in my 1 minute, sir. So I have written that optimistic attitude leads to growth. ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिस्टिक को Optimistic. मैंने मार्क किया है. हाँ, so वो इंग्लिश मे भी चेंज हो ग्रामर, गया होगा, ग्रामर. but grammar हाँ sir, I know. मतलब I have ऑप्टिमिज्म. मतलब वर्ड शुड बी optimistic ऑप्टिमिज्म. attitude. Okay. वर्ड शुड बी Optimism. Okay, नॉट sir. ऑप्टिमिस्टिक. हाँ, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड. Always. ऑलवेज. बताओ भाई. Hard work always pays off. हार्ड वर्क ऑलवेज Pay off. पे ऑफ. Yes, sir. एनीवन हु इज हैविंग एनीथिंग बेटर देन दिस? Sir, I have ये थोड़ा written ज्ञान always टाइप aim है क्या? high. थोड़ा Yes, सा sir. ज्ञान टाइप है ये. चलो एनीवन. हाँ, बोलो बोलो. Sir, I have written always aim high. ऑलवेज एम हाई. ठीक है, ये भी थोड़ा ज्ञान है. Sir, can we write a soldier always put his country first, then his interest? थोड़ा लंबा हो सोल्जर जाएगा.
always put his motherland first, then before his interest. Always puts his country first and Then his interest. then his. Yeah, then himself, sir. Then himself. Very nice. Very nice. So, in a way, you are giving some kind of gratitude to soldiers, and that is how you look at them. So, So, it shows your sir, perspective. your screen is not visible, which you're writing, sir. Ha, wait. I'm actually recording it. Once this is Okay, over, okay, then I will come. Ha. okay, sir. Once I start the recording, then what happens is okay. Next, this is what verbal discussion. Once we'll go to this OLQ next one, then we will do. What is the next one? Anyone in any doubt in this? Always. महेंद्र कुछ नहीं बोल रहे हो आप. You have thumbs up. I think I have. I'm हाँ नहीं. thinking. I'm listening of others. You're listening to others. Okay. Anyone with a different perspective. This one was very good. A soldier. This is how you're associating. Always aim high, slightly neutral. Then hard work always pay off is also slightly neutral. Anyone better than this? Tell me. Sir, always remember that you are loved. हाँ ये थोड़ा सा एसोसिएशन है. ऑलवेज रिमेंबर. इससे क्या हमें इस इंसान के बारे में पता चलता है? एनीवन दैट यू आर being loved. What does it show? He has a good relation with others. Yes. And yesterday, which class which I was taking on confidence, was I not talking about this? Correct, sir. I give you the example of that Father. father, and also that example ki why ultimately why people end up doing or taking extreme steps, because they don't remember this. And why they don't remember this? Because it is not there. Why it is not there? Because why it is not there? Why is this bond missing? The main factor is you again. So it is you who has to energize. It is always reciprocative in nature. Any bond, any relation, anything that you see around you, it is always reciprocative in nature. It's quid pro. You give and you get. Khaskar relations mein, wherever you are having some complaints, please think about what you are doing. So this one I'll rate as the best. Get the point? Always remember that you are being loved. बात समझ में आई? Yes, sir. That will encourage you to love. That will encourage you to believe. Again, that system of belief and faith. That will encourage you to believe in failures also. And then believe in bouncing back from failures also. ठीक है? Anyone, anything else? Should we go on? Go on. Next बताओ. Education, sir. Education. Education will be by and large little plain association. Still, tell me what you have written. Education builds strong nation. Build strong. Nation. Very good. Very good. किसी ने न्यू So एजुकेशन education पॉलिसी के helps बारे in में लिखा. developing. Someone wrote about new education policy. What was that? So I have written, sir. New education This, policy. has given flexibility to choosing courses. Very Students. nice. This is a better association. Flexibility. Didn't I tell you कि it is also related to your intellectual understanding of the word and system? Didn't I tell you that? बोला था ना मैंने? How you associate with your word also is linked to how intellectually you associate with it. एक हो गया plain association. नाइफ का हमने एग्जाम्पल लिया था, याद है? एक हो गया बहुत ही सटल लेवल का एसोसिएशन, और एक हो गया इंटेलेक्चुअली vibrant association. So NEP actually gives you a lot of flexibility. Switch off the mic. Someone's mic is on. Connect yours. And NEP is actually giving a lot of flexibility. So what does it show? This kind of personality is looking forward to explore more from the courses. He is optimistically looking at new education policy. Right? Right? Anyone, anything except for this? Sir, education is freedom. Education is freedom. Now, how is it a freedom?
How and why it is a freedom? So that just come in my mind, so I wrote it. To then explain. Okay. What kind of freedom are we talking about? Independent, maybe. Independent what? Financial independence, education wise, being able to take decisions, helps in taking good decisions. Acha, you're trying to define the freedom here? Maybe this is what Okay. he would be connecting with. Education is freedom, I think, is slightly mm, not very good. Education is power. Education is uh, education is और कुछ बताओ? Education is Education is the sir one of the pillar to become developed countries. So education pillar can of eliminate poverty. pillar of Education can development. Yes, yes. Pillar of development, yes. Freedom, yes. Or freedom, free education is right of all. Free education is right of all. Maybe Frank, connecting with RTE, right to right to education. education bill that we discussed. Actually speaking, the state or state का मतलब है government or a country should only be working on these areas. What should state be doing? It should be ensuring that there is a free education, and it should be ensuring that there is a free quality education. That is how the state should work. State should not be working in providing employment. State should be working in providing good education. And then state should be working in creating a safe and secure environment. So that people who are educated are feeling safe and secure to work ahead, to become entrepreneurs, to start their own things, or companies who are working outside, who are from outside, they also feel safe and secure to come back, to come to that place and start operating. Are you getting my point? अभी बिहार में इतने साल हो गए, अभी आप सबने देखा होगा जाति जनगणना हुई है वहां पे. It is rubbish. Why it is rubbish in my opinion? Because this is not going to help anyone. What बिहार should ensure is कि मेरे यहाँ पे लोग आके इन्वेस्टमेंट करें. Yes, sir, true. वहां पे जब इन्वेस्टमेंट होगी तब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो कोई जाति की बात नहीं करेगा. अब क्या होगा जाति की बात करने से? तुमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी नहीं, तुमने वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट किया नहीं. You could not create an environment where people are feeling free to come and invest in your state. Not even a single investment, yaar. Abhi here I'm in Gujarat. I'm sitting here in Gandhinagar in Ahmedabad. That chip company, I'm forgetting her name. Micron. Micron, sir. Foxconn and Micron is Micron. coming up in such a big way. Such a massive work is going on. So much of employment will be generated. Land value has gone up. Associated employment starts. But what are we doing? So that is what education is one of the pillars of development. एक बार आप एजुकेशन करें, स्टेट को सिर्फ उसी पे काम करना चाहिए. स्टेट को एम्प्लॉयमेंट देने पे काम करना ही नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बनाने में काम करना है. ये हमारे माइंडसेट में थोड़ा सा इश्यू है कि हम समझ नहीं पा रहे. एनीथिंग एनीवन? सर एजुकेशन को हम मिड डे मील से नहीं कर सकते हैं कैसे? हाँ, मिड डे मील स्कीम से प्रोवाइडेड लिंक्ड विथ एजुकेशन इज अ गुड इनिशिएटिव. ऐसा कुछ है ना? Sir, I've written practical approach is a great way of learning. प्रैक्टिकल लर्निंग इज, Practical approach is a great way of learning उसी को मैं for रिफाइन education. कर रहा हूँ. प्रैक्टिकल लर्निंग इज बेस्ट एजुकेशन. यस. इनफैक्ट आजकल तो एम्फेसिस भी प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा हो रहा है. कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल लर्निंग से ज्यादा
आप लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दें। इनफैक्ट फौज में व्हेन आई कवर्ड यू इफेक्टिव इंटेलिजेंस, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कि हाउ प्रैक्टिकली इट इज एप्लीकेबल। मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इफ यू सी, दे वर नॉट वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, ऐसे एक्सेप्शनली ब्राइट नहीं थे। कनिष्क योर माइक। Oh, sorry, बट sir. ब्राइट तो नहीं थे, बट दे वर वेरी प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट। रीड द स्टोरी ऑफ जकबर्ग, और एप्पल वाला कौन था? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की एक किताब है, मैं वो रिकमेंड करना भूल गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक? आई स्टीव। Yes, sir. द नेम ऑफ द Something. बुक इज आई स्टीव। ये पढ़ सकते हो आप। वेरी गुड बुक टू रीड, है ना? अच्छी बायोग्राफीज पढ़ने से ना आपको एक्चुअल में ट्रू मोटिवेशन, जो हम लोग कल बात कर रहे थे अबाउट सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स में थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा होता है और रिलेट करना आपके ऊपर है। परंतु अगर आप गुड बायोग्राफीज पढ़ो सक्सेसफुल लोगों की, दे आर ऑल्सो मोटिवेटर्स coming against odds, but they last with you. A good book is like a wine, it should last with you, and it should help you to transcend yourself from um, a level where you are, your imaginative skills and your thought process, to a slightly different level. That is the job of a good book. एक जॉन नैश पे मूवी बनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. It was played by John Nash, who was the mathematician. What is the name of that movie? हाँ, एक और मूवी मैं तुम्हें बताना भूल गया था, उसको लिख सकते हो, इमिटेशन गेम। इमिटेशन गेम मैंने बताया था, है ना? No, sir. इमिटेशन गेम इज अ फैंटास्टिक मूवी, डू वॉच इट। हो सकता है पहली बार में समझ में ना भी आए। इमिटेशन गेम इज अबाउट जो जर्मन्स के यू बोट्स थे ना, यू बोट्स उनके सबमरीन्स को बोलते थे, उसका कोड होता था एक, और उसका एक वो था, बॉक्स था, और उसको उसको ये लोग बोलते थे एनिग्मा। एनिग्मा मीन्स काइंड ऑफ अ इल्यूजन। तो वो उस कोड को ब्रेक करने पे है ये, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग इज कि जर्मन्स वर कम्युनिकेटिंग ओनली थ्रू दोस कोड्स, एंड दे वर नॉट एबल टू मेक आउट कि कहाँ पे है ये जर्मन सबमरीन, एंड दे यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ऑल द मर्चेंट शिपिंग दैट वाज कमिंग। जो भी सप्लाईज आते थे, वेसल्स आते थे, तो कैसे इस कोड को ब्रेक किया, एक मैथमेटिशियन ने किया था। इतना खूबसूरती से बनाया है इस मूवी को, आप लोग जरूर देखिएगा, इमिटेशन गेम, ठीक है? Then I'm forgetting the name of that movie, but you can check on internet. Ki movie made on John Nash, mathematician. If someone can check now, and that movie is also good to watch. Ki how this person, he actually went into dementia, and how he worked on his mathematics and all those things. उस पे है। ठीक है guys, चलो next लें quickly फटाफट। यहाँ वहाँ की बातें ज्यादा हो जा रही हैं। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अ ब्यूटीफुल माइंड है क्या? हाँ, ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश पे, बहुत खूबसूरत मूवी, जरूर देखिए। And did I tell you about Shawshank Redemption also? Sir. That you might have seen Shawshank Redemption. यस सर, यस सर। Very good movie to watch. ठीक है, चलो next हो, जल्दी। हाँ, होप के ऊपर है ना सर? Shawshank Redemption is all about hope. मतलब you need to believe this person. I don't know how true is the story, but this person dug a hole in about, I'm forgetting the depth of that wall now, but I think it was 30 feet? नहीं, more than that. हाँ, 30 feet. 30 feet deep wall को उसने एक छोटी सी उससे जो आर्टिस्ट यूज करते हैं ना, लिटिल हैमर, with that hammer he dug that wall, he came out. What was the difference? Add-in difference. It is a classic cult, and in that, if you see that person, apna, what is the name of that actor? Black actor, very good actor, classic actor, matlab, amazing. What's his name, yaar? मॉर्गन फ्रीमैन। Morgan Freeman, and that person I'm forgetting his name also. But watch this movie; it will transcend you to a different level, and it will add so much to your, जो हम लोग करते रहते हैं ना, imaginative skills,
इन्हीं चीजों से डेवलप होंगी, इन्हीं चीजों से बिल्ट So अप। please repeat the name, sir. शॉशैंक रिडेम्पशन, इमिटेशन गेम, ब्यूटीफुल माइंड, और एक सीरीज भी है, एचबीओ पे थी पहले, अभी इसी पे मूवीज पे बात हो रही थी, ये भी बता दूं, देयर इज अ सीरीज कॉल्ड, पहले उस पे आई थी डिस्कवरी पे, बैंड ऑफ बॉयज। बैंड ऑफ बॉयज इज सच अ वंडरफुल मेड एंड ट्रू स्टोरी। जो डी डे लैंडिंग हुई थी, इन लोगों ने पैराशूट से अमेरिकन ट्रूप को ड्रॉप किया था, एंड दिस इज अबाउट दीज अमेरिकन ट्रूप्स, बैंड ऑफ गाइज हु आर पैराट्रूपर्स। इनका एक हीरो है जो कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, हाउ दे यू नो इन द ड्यूरिंग द एंड फेज ऑफ द वॉर, हाउ दे एक्चुअली went through their journey, clearing the ambushes, clearing all these things, and true kind of fights, which were so amazing treat to watch. Pandu Boys, it's a series, and I think it is about, and it's a true story. उसके बारे में भी है, जो उनका लीडर था, he is alive, then he was sent to Japan also, and how they actually do watch it. Pandu Boys, ठीक है? सर बैंड ऑफ बॉयज है कि ब्रदर्स है? Pandu Brothers है क्या? 2001 वॉर मूवी है क्या? नहीं, मूवी नहीं है, it's a series. हाँ, मिनी सीरीज है। मिनी सीरीज है। हाउ मेनी एपिसोड्स? HBO पे है ना? अभी तो जियो सिनेमा पे दिखा रहा है सर। दिखा रहे हैं ना? पैंडो ब्रदर्स होगा। 506 रेजिमेंट ऑफ 101 एयरबोर्न डिवीजन, वो है क्या? यस, ओके। ट्रू स्टोरी। इसको देखो, थोड़ा मिलिट्री वाली फीलिंग भी आएगी, और वर्ल्ड वॉर 2 का कैसा स्टेजिंग किया इन्होंने, बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड क्विकली, नहीं तो ये करते रह जाएंगे आज। Failure, sir. Next word. फेलियर, इट्स अ टफ वर्ड, लेट मी सी व्हाट ऑल यू हैव मेड, टेल मी वन। Failure gives experience. अभिषेक, Yes, sir. फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, Yes, sir. व्हाई नॉट लर्निंग वैल्यू? Um, फेलियर should be. गिव्स लर्निंग वैल्यूज। Yes, sir. हाँ, तो आपके एक्सपीरियंस के उसको मैंने थोड़ा सा क्वांटिफाई कर दिया, या वो कर दिया मैंने, कौन सा एक्सपीरियंस मैंने ये डिफाइन कर दिया, तो इट एक्चुअली गिव्स यू लर्निंग वैल्यूज। Value. यू शुड नॉट बी लर्निंग ओनली फ्रॉम योर फेलियर, यू शुड आल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स फेलियर। सुना है ना ये? Yes, sir. सारी Yes, sir. गलतियां Yes. खुद करके नहीं सीखनी है, कुछ गलतियां दूसरों Yes, को sir. करने दो, उससे भी सीख लो, है ना? महेंद्र, आपने क्या लिखा था? एनीवन? So bouncing back हम्म with better preparation. बाउंसिंग बैक विद बेटर, आगे क्या, पूरा वर्ड तो बनाओ, पूरा सेंटेंस। Yes, bouncing back with better preparation हाँ, gives a better result. फेलियर कहाँ है इसमें? Sir, I wrote Bouncing back with consistent effort can turn failure after. into success. एक मिनट महेंद्र, इसमें फेलियर है कहाँ? Yes, sir. Has bouncing back with better preparation after failure. गुड, थोड़ा लंबा है लेकिन। Sir, ये मेरे को ये डाउट ये आ रहा है that I have taken more than 15 seconds for each. Then it is a So, problem. That is what I have been telling class 1 से. It has to be yes, sir. crisp. It has to be Crisp. छोटा करना आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। वो ऐसे आएगा कि मैंने जो एक तो किताब जो तुमको बोली है, ठीक है? हाँ, मेरी किताब बोली है पॉलिसी. ना, एक रिकमेंड की किताब, फिर मैंने ट्रिक्स बताए हैं कि क्या-क्या करना है। ये आर्ट आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस के साथ ही